Question number 3. Place the following number in the place value chart and find the place value of the underlined digit. फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है इस नंबर के लिए. उसके बाद आपने इस अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है. सो पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इस नंबर के लिए. सो फर्स्टली राइट डाउन हियर पीरियड्स and here places. According to the Indian system of numeration, there are 4 periods and these are ones, thousands, lakhs, crores. Period ones is further subdivided into 3 parts and these are ones, tens, hundreds. Period thousands is further divided into 2 parts. These are thousands, 10,000s. Period lakhs is further divided into 2 parts. These are lakhs, 10 lakhs. Period crores is further divided into 2 parts. These are crores, 10 crores. So I'm going to explain you again. Period according to Indian system of numeration, there are 4 periods. These are ones, thousands, lakhs, crores. Period first is further divided into 3 parts and these are ones, tens and hundreds. Period thousands is further divided into 2 parts. These are thousands, 10,000s. Period lakhs is divided into 2 parts. These are lakhs and 10 lakhs. Period crores is further divided into 2 parts. These are crores and 10 crores. So, according to the Indian system of numeration, there are 4 periods and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 place values. So, according to the Indian system of numeration, there are 4 periods and 9 place values. So, the number given is 2, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 4. So, 4 is in the ones place. So, write down 4 here under ones place. 8 is in the tens place. So, write down 8 under tens place. 7 is in the hundreds place. So, write down 7 here. And in this way, you have to write down each digit according to their place values. 3, 6, 5, 4 and 2. So, this is the place value chart for this number. Now, find out the place value of the underlined digit. ये डिजिट है जिसको अंडरलाइन किया गया है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. ठीक है. सो इट मीन्स कि ये डिजिट हुआ तो ये डिजिट की हमने क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू. राइट. तो 4 इज इन दी 10 lakhs प्लेस. सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 40 lakh. राइट. तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई, 40 lakh. तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमर्स इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. कॉमर्स कैसे इंसर्ट करते थे, हम सभी पीरियड्स को सेपरेट करते थे. ये तीनों प्लेसेस पीरियड वंस में आती है तो हम यहाँ कॉमा डालेंगे. ये दोनों प्लेसेस पीरियड थाउजेंड्स में आती है तो हम यहाँ कॉमा डालेंगे. ठीक है. अभी सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आई इस डिजिट की, 40 lakh.